Assalamualaikum, dear students of Senior 1. This is your teacher Hina from FGS Campus 9. So, dear students, I hope you are all fine. And today I would like to discuss a lot of important things with you regarding your paper pattern of Islamiyat, which is according to CAIE. Right, beta? So, inshallah, after 2 years, you would be able to sit for your final exam, and in Islamiyat subject you will be giving two papers, paper 1 and paper 2, and both papers will be conducted on different days. Paper 1 and paper 2 both consist of 50 marks. The time duration for both papers will be 1.5 hour, right beta? In both papers total questions will be 5, and in both papers you will have to attempt any 4 questions, but in both papers the first 2 questions are compulsory, and out of 3, 4 and 5 you will be attempting any 2 of your choice. So it means that you can leave only one question from 3, 4 and 5. Either it can be 3 or 4 or 5, right beta? Here you can see this is your paper 1, right? And here you can see that there are 4 questions. So actually in exam there are total 5 questions. ठीक है, मैं आपको जब समझाऊंगी तो पता चल जाएगा कि वो 5 है या 4 या किस तरह से. बट कीप इन योर माइंड दैट टोटल 5 questions will be there in both papers, right beta? So now let's talk about your chapters. The book is not new for you. In your previous class in level 8 you have studied that book. Not the all topics, but you have read some topics ना, कुछ topics पढ़े हैं, not the complete book, but inshallah in this class you will be completing your book. So in that book there are total 8 chapters. First 4 chapters, from first 4 chapters paper 1 questions are taken out from first 4 chapters which are asked from you in paper 1, right beta? And then remaining 4 chapters like chapter 5, 6, 7, 8, so in these 4 chapters questions are taken out for your paper 2. So the paper pattern is also very easy. Okay, so chapter 1 in paper 1 will be asked from you for the question number 1. ठीक है, chapter 1 क्या था? Major themes of Quran, in which passages of Quran are mentioned, like verses or small surahs, short surahs. ठीक है, so major themes of Quran, it is the first chapter, and first question will be asked from you from this chapter. The main theme and importance of those passages will be asked from you. ठीक है, and that question will be of 8 marks. Main theme will be of 4 marks, and importance will also be of 4 marks. 3 passages will be provided to you, and out of those 3 passages you will be attempting any 2 of your choice. Now chapter 2, which is history and importance of the Holy Quran. So question number 2 will be from the chapter 2, ठीक है, of the paper 1, and this question will be of 14 marks. Part A will be of 10 marks and part B will be of 4 marks. ठीक है, हमें the history and importance of Holy Quran, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? Like how the Holy Quran, how was it compiled and how was it preserved? Such sort of question can be asked from you. Then chapter 3, from chapter 3 beta, अच्छा let me tell you one thing, question 1 and 2 are compulsory. ठीक है, there is no choice between these 2 questions. Okay, from chapter 3, that is the life and importance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From this chapter question number 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 4. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 तो डन है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट. ईदर इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द मक्की लाइफ और द मदनी लाइफ. थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ चुके हैं इन योर प्रीवियस क्लास. सो क्वेश्चन विल बी ऑफ 14 मार्क्स. पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. देन कम टू द योर 4th चैप्टर, द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी.
टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, और अगर दो क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो एक तो लाजमी पूछा जाएगा. देखें, वन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3 एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4, ये तो कंपलसरी है. तो अब जो रिमेनिंग एक क्वेश्चन रह गया ना, क्योंकि ये तो वी हैव 4 क्वेश्चन, बट पेपर में आपके पास देयर विल बी 5 क्वेश्चन. तो वो जो 5वां सवाल होगा वो कहाँ से आ सकता है, या तो वो चैप्टर 3 से होगा या वो चैप्टर 4 से होगा. लेकिन एक क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स वो तो डन है. एक मतलब वो तो इट इज़ श्योर, इट मस्ट बी. आपको ये बात यकीनी तौर पे पता होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आ रहा है, बट जो एक और रिमेनिंग क्वेश्चन है इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईदर चैप्टर 3 और 4. ठीक है. सो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट. अच्छा, जो चैप्टर 4 है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से, फ्रॉम दिस चैप्टर अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो इट विल बी ऑफ 14 मार्क्स. डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अगेन सेम, 10 मार्क्स फॉर ए पार्ट एंड बी पार्ट के होंगे, देर विल बी 4 मार्क्स. ठीक है. सो आप यू कैन कैलकुलेट द मार्क्स. ये क्या हो जाएंगे, 50. राइट बेटा. नाउ कम टू द पेपर पैटर्न ऑफ पेपर 2. इट इज़ कम्प्लीटली सेम लाइक पेपर 1. 50 मार्क्स, total 5 questions, time duration 1 hour and 30 minutes. Question 1 and 2 are compulsory, and the remaining 2 questions can be solved from the choice. 3 questions will be given to you ना, यानी कि 1 और 2 तो compulsory. उसके बाद question number 3, 4 and 5 में से you can be attempting any 2 of your choice. So first question of paper 2 will be asked from the chapter 5. Chapter 5 is major teachings of the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So one question can be asked from this chapter of 8 marks. 4 marks for 4 marks से जो question होगा इसमें वो ये पूछा जाएगा कि what does the following hadith teach us, और फिर B part में पूछा जाएगा how can we put the teachings of this hadith into action. 4 marks की distribution होगी. Right बेटा. 4 hadiths will be given to you and you can be solving you will be solving any 2 of your choice. Now come to the question number 2. It will be asked from chapter number 6, that is history and importance of the hadith. इस chapter में you will be showing your hard work because the concepts are little bit difficult. ठीक है. Okay, so one question can be asked from this chapter of 14 marks. 10 marks for A part and B part consist of 4 marks. So question number 1 and 2 are compulsory. Now come to the question number 3. It will be asked from chapter number 7, and this chapter is the period of rule of the rightly guided caliphs and their importance as leaders. यानी कि in this chapter the life, the services of 4 caliphs are mentioned: Abu Bakr, Umar, Usman and Ali Raziyallahu Ta'ala anhum. Right. So one question from this chapter is done. एक तो है, one will be definitely asked, right, but they can also ask one more question from this chapter. ठीक है. Okay, now come to the chapter number 8, which is the last chapter of your book. It is the articles of faith and the pillars of Islam. So from this chapter one question it will be definitely asked regarding your article, regarding the articles of faith or the pillars of Islam, and it will also be of 14 marks, but एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है. ठीक है. बिल्कुल इट इज़ सेम पैटर्न है पेपर 1 की तरह. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा जा सकता है 7 से. अगर क्वेश्चन नंबर 4 7 से नहीं पूछा गया सो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी फ्रॉम द चैप्टर 8 द आर्टिकल्स ऑफ फेथ. तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी द आर्टिकल्स ऑफ फेथ से पूछा जा सकता है. ठीक है. आई एम श्योर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न in my WhatsApp number. ठीक है. वहाँ भी आप यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच सीनियर 1.